Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to the 9th lecture of Business Mathematics UrduMTH367. Today we will study the chapter number 8, and the topic of the chapter number 8 is Mathematics of Finance. So what are the objectives of this chapter? So first objective is to discuss the interest rates and their effect on the value of money. So basically ये जो chapter है ये फाइनेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है, और इसमें हम हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हम स्टडी करेंगे इंटरेस्ट रेट्स, किस किस टाइप का इंटरेस्ट होता है और फिर उनका इफ़ेक्ट जो होता है वो मनी के ऊपर क्या होता है. प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी विद टाइम मनी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी वैल्यू किस तरह से बढ़ती है या कम होती है, तो इसके बारे में भी डिस्कशन होगी. प्रोवाइड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैथमेटिक्स ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटेशन फॉर सिंगल पेमेंट एंड एन्युटी कैश फ्लो स्ट्रक्चर. तो दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, एक सिंगल पेमेंट और एक एन्युटी कैश फ्लो. तो उसके लिए जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे. So what are the main topics which we will study in this chapter is interest and its computations, single payment computations, annuities and their future value, and annuities and their present value. तो ये चार टॉपिक्स हैं जो कि मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के. So what are today's topic? आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे. So today we will start with the interest, and in the interest we will have next topic which is simple interest. उसके बाद होगा compound interest. उसके बाद है graphical comparison कि इन ये जो दो टाइप के इंटरेस्ट हैं इनको ग्राफिकली किस तरह कंपेयर किया जाता है, और बाद में हम उसके साथ कंटिन्यूस इंटरेस्ट भी पढ़ेंगे, कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट की ख़ास टाइप है, और आखिर में हम सिंगल पेमेंट और उसकी कंप्यूटेशंस को समझने की कोशिश करेंगे. So let's introduce a little bit about this chapter. So in this chapter we shall model selected topics in finance that deal with time value of money such as investments, loans, etc. तो हम वो टॉपिक्स जो कि इन्वेस्टमेंट और लोन से रिलेटेड हैं उनको हम मॉडल करने की कोशिश करेंगे कि उनसे हम मुख्तलिफ फार्मूले बना के किस तरह हम कंप्यूट कर सकते हैं कि मुख्तलिफ टाइम के अंदर इस इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी, या ये लोन है तो ये कितना बढ़ जाएगा या कितना कम हो जाएगा. सो मेनली वी विल स्टडी द इंटरेस्ट रेट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द वैल्यू ऑफ मनी, यानी हम इंटरेस्ट रेट्स और उनकी जो मनी के ऊपर इफेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे. इंटरेस्ट्स आर नॉट ओनली रिलेटेड टू मनी बट द अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय रेट ऑफ ग्रोथ. जैसे कि इंटरेस्ट एक रेट ऑफ ग्रोथ होता है, इसी तरह जो कुछ और फिनोमिना है जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ है या इस टाइप की चीज़ हैं, इसको भी हम जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जैसे कि इंटरेस्ट का रेट ऑफ ग्रोथ होता है इसी तरह पॉपुलेशन का भी रेट ऑफ ग्रोथ होता है. तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम जो स्टडी कर सकते हैं. जो फार्मूले हम डेवलप करेंगे या पढ़ेंगे नॉर्मल इंटरेस्ट के लिए, उन्हीं को हम पॉपुलेशन जो ग्रोथ है मनी के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी एक ग्रोथ होती है. सिमिलरली पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती है तो वो भी एक ग्रोथ होती है. सो हम बेसिकली इन दोनों को एक तरह का फिनोमेना के तौर पर स्टडी कर सकते हैं, यानी एक ही फार्मूला जो है वो इन दोनों को स्टडी करने के लिए यूज़ हो सकता है. सो दैट्स ऑल्सो विल बी आवर टॉपिक विच वी विल बी डिस्कसिंग. Interest. So let's define interest. So the interest is a fee which is paid for having the use of money. तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन ये है कि ये वो फीस है जो कि पैसा इस्तेमाल करने के ऊपर दी जाती है. So we pay interest on loans, for example, for having the use of bank's money. जैसे कि हम जो है इंटरेस्ट अगर बैंक से हम लोन लेते हैं तो उसके ऊपर भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं. Similarly, the bank pays interest on money invested in saving accounts because the bank has temporary access to our money. इसलिए बैंक में जब हम सेविंग अकाउंट में मनी रखते हैं तो बैंक भी हमें उसके ऊपर
इंटरेस्ट देता है, क्योंकि बैंक को जो होता है तो हमारे पैसे के ऊपर एक टेम्परेरी किस्म का इख्तियार होता है और वो उसको इन्वेस्ट कर सकता है। सो द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ लेंट और इन्वेस्टेड इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल, यानी वो पैसा जो कि आप बैंक में रखते हैं और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, या फिर वो पैसा जो बैंक आपको बतौर कर्ज देता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं। Interest is usually paid in proportion to the principal amount and the period of time over which the money is used। तो इंटरेस्ट बेसिकली पे किस तरह किया जाता है? तो इंटरेस्ट पे किया जाता है, एक उसमें दो फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर होता है पैसे का और एक फैक्टर होता है टाइम का। यानी जितनी आपने मनी पे की है तो उसके परसेंटेज, किसी परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे, और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि उस परसेंटेज के हिसाब से आपको कितने पीरियड के बाद पैसे मिलेंगे। सो देयर आर टू फैक्टर्स, वन इज़ टाइम यानी पीरियड आल्सो काउंट्स, एंड अदर इज़ द प्रिंसिपल, जो कि आपने अपना बेसिक जो अमाउंट है वो कितनी है। द इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाइज द रेट एट विच द इंटरेस्ट एक्यूमुलेट्स। तो इंटरेस्ट रेट जो होता है स्पेसिफाई करता है उस रेट को जिसमें इंटरेस्ट आपको इंटरेस्ट जमा होता है। इट इज़ टिपिकली स्टेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट पर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको हम, जो हमारी प्रिंसिपल होती है कैपिटल या अमाउंट, उसके ऊपर उसका कुछ ख़ास परसेंटेज इंटरेस्ट होता है, और यानी ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल 18% पर ईयर, यानी कोई अमाउंट है तो उसके ऊपर 18% पर ईयर इंटरेस्ट हो सकता है, और 12% क्वार्टरली, जिसका मतलब है कि हर 3 महीने के बाद आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी, एक एग्जांपल है कि इंटरेस्ट रेट्स को स्पेसिफाई किस तरह से करते हैं। या फिर हो सकता है कि 13.5% पर मंथ, यानी हर महीने आपको 13.5% मुनाफा मिलेगा। तो ये भी एक किस्म है इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट। सो व्हाट इज़ सिंपल इंटरेस्ट? Interest that is paid solely on the amount of principal is called simple interest। सिंपल इंटरेस्ट होता है जो कि आपका प्रिंसिपल होता है, यानी जो आप जमा कराते हैं, या वो जो आपका बैंक से लेते हैं, तो जो आपका प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है उसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लोन्स और इन्वेस्टमेंट्स विच आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। तो सिंपल इंटरेस्ट यूजुअली ऐसे कर्ज़ों और इन्वेस्टमेंट्स के साथ रिलेट करते हैं, या ऐसे कर्ज़ों और इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है कि जब वो शॉर्ट टर्म टाइप के हों, यानी कि थोड़े से अरसे के लिए अगर कोई लोन दिया जाए या थोड़े से अरसे के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट यूजुअली देते हैं उसको सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे दिया जाता है। सो इट इज़ कंप्यूटेड एज simple interest is equal to the principal time interest rate per time period into interest rate per time period and into number of time periods। So there are 3 factors. So we denote simple interest by I, and we denote the principal by P। इंटरेस्ट पर टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं आई से, और नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स को एन से। तो इंटरेस्ट होता है हमारा पी टाइम्स आई टाइम्स एन। सो हियर इज आई इज इक्वल टू पी टाइम्स आई टाइम्स एन। सो वेयर आई इज सिंपल इंटरेस्ट, पी इज आवर प्रिंसिपल, I is the interest rate per time period, and N is the number of time periods।
तो इसमें नोट करने की इम्पोर्टेंट बात क्या है कि while calculating the interest I, it should be noted that both I and N are consistent with each other, that is expressed in same duration. I और N के बारे में हमने ये ख्याल रखना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसिस्टेंट है, मतलब है कि ये दोनों जो है किसी सेम ड्यूरेशन के दौरान, यानी नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स और इंटरेस्ट रेट पर टाइम पीरियड जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। यानी ये नहीं, आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट रेट तो किसी और टाइम पीरियड का डिफाइन कर रहे हैं और नंबर ऑफ पीरियड जो है वो कहीं उससे रिलेट नहीं करते। एग्जांपल करते हैं जिससे आपको बेसिकली ये क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सो एग्जांपल टू कैलकुलेट द simple interest. So a credit union has issued a 3-year loan of $5,000. Simple interest is charged at the rate of 10% per year. The principal plus interest is said to be repaid at the end of the third year. Compute the interest for the 3-year period. What amount will be repaid at the end of the third year? So क्वेश्चन है कि 3 साल का जो एक लोन दिया है क्रेडिट यूनियन ने जो कि $5,000 है और उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 10% पर ईयर के हिसाब से उन्होंने मुकर्रर किया है। तो आखिर में प्रिंसिपल जो कि यहाँ पे $5,000 है और उसके ऊपर प्लस जो इंटरेस्ट है इसको वापस करना होगा 3 साल के बाद। तो सवाल है कि आप जो 3 साल में इसके ऊपर इंटरेस्ट बनेगा वो कैलकुलेट करें और जो अमाउंट 3 साल के बाद वापस करनी होगी वो भी बताएं। सो हियर वी हैव सॉल्यूशन। Here our P, which is a principal, is given by $5,000 and I is 10%, 10 by 100, so this is 0.1 per year, and N is 10 क्योंकि हमने 3 साल के बाद वापस देनी है और इंटरेस्ट जो है हर साल के बाद लगता है 10%। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो N है जो कि हमने स्पेसिफाई किया था कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स हैं, तो ये 3 है। So let's calculate the interest over the 3 years. So therefore $5,000, therefore I is equal to P times 0.1, which is I, and N, which is 3. So 5,000 into 0.1 gives us 500 and into 3, so this is 1,500. So I is equal to $1,500। इन 3 साल में जो $5,000 का लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो होगा $1,500। सो ये एक सवाल का आंसर हो गया। सेकंड है कि व्हाट अमाउंट विल बी रीपेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। सो द अमाउंट टू बी repaid is the principal plus accumulated interest, or A is equal to P plus I. So this is 5,000 plus 1,500, which is, we just write down straight away in dollars, to be $6,500.
सिंपल इंटरेस्ट के साथ $5,000 के लोन के ऊपर जो कि 10% पर ईयर हो तो 3 साल के बाद $6,500 वापस करने होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट। So in compound interest, the interest earned each period is reinvested, that is added to the principal for purposes of computing interest for the next period. जो कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है उसमें जो इंटरेस्ट होता है उसको री इन्वेस्ट किया जाता है, यानी जैसे कि पिछली एग्जांपल में $5,000 थे तो उसमें 1 साल के बाद $500 का इंटरेस्ट था, तो वो अगर अमाउंट री इन्वेस्ट की जाए तो नेक्स्ट टाइम जो इंटरेस्ट होगा 10%, वो 5,000 के बजाय $5,500 के ऊपर 10% ऐड किया जाएगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द compound interest and the simple interest. The amount of interest computed using this procedure is called the compound interest. तो इस प्रोसीजर के तहत जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है उसको कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। So let's do an example which will clarify the concept of compound interest. So assume that we have deposited $8,000 in a credit union which pays interest of 8% per year compounded quarterly. So हमने फॉर एग्ज़ाम्पल $8,000 जो है वो क्रेडिट यूनियन में इन्वेस्ट किए हैं और वो जो है 8% पर ईयर उसके ऊपर 8% उसके ऊपर इंटरेस्ट देती है पर ईयर, लेकिन कंपाउंड करती है क्वार्टरली। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडेड क्वार्टरली के हर 3 महीने के बाद वो 8% उसमें ऐड करके जो नेक्स्ट उसके ऊपर एडिशन है वो 8,000 प्लस इंटरेस्ट को ऐड करके उसके ऊपर मुनाफा लगाएगी। सो लेट्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 क्वार्टर एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर वुड बी, पहले 3 महीने ख़त्म होने के बाद जो अमाउंट आएगी इंटरेस्ट की वो होगी I इज इक्वल टू 8,000 P, उसके ऊपर जो हमारा I है वो है 8% जो कि 0.08 है, और उसके ऊपर जो हमारा टाइम है वो 0.25 है। Why is it 0.25? I will just write down the detail. तो ये आता है हमारे पास $160। So here N is equal to 0.25 here because of quarterly interest compounding, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, तो इसलिए हम बेसिकली यहाँ पे बजाय 1 के 1 साल का जो चौथा हिस्सा है जो कि 1/4 है जो है विच इज़ इक्वल टू 0.25, उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n की जगह पे। सो विद द इंटरेस्ट लेफ्ट इन द अकाउंट, फॉर एग्जांपल हम इंटरेस्ट को है अकाउंट के अंदर ही छोड़ते हैं। सो विद द इंटरेस्ट left in the account, so the principal जो कि इस केस में हमारा $8,000 है, on which interest is earned in the second quarter is the original principal plus $160 in interest earned during the first quarter। तो हमारे पास जो नया प्रिंसिपल होगा, so the principal on which interest is earned in the second quarter is the original principal plus the $160
$60 in the interest earned during first quarter. So the principal for the second quarter would be our first principal, which is $8,000, plus the interest, which is I1. So this will be 8,000 plus 160, which is 8,160. तो पहले 3 महीने के बाद हमें $160 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी पहले क्वार्टर के बाद. इसके बाद जब सेकंड क्वार्टर में इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होगा तो वो होगा, उसके लिए हमारे पास नया प्रिंसिपल आएगा. नया प्रिंसिपल मीन्स एक तो हमारी अपनी प्रिंसिपल होगा जो कि $8,000 है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसको भी ऐड करेंगे. तो जो नया प्रिंसिपल होगा सेकंड क्वार्टर के एंड पे मुनाफा कैलकुलेट करने के लिए वो होगा $8,160. So the interest earned during second quarter is I2, which would be 8,160 into 0.08, which is I, and into 0.25, which is N. So this would be $163.2. So continuing, we get the third principal. The principal for the third quarter would be our second principal plus the interest I2. So this was 8,160 plus 163.2. So this will be $8,323.2. So if we continue on after 4 years, so total interest earned during the 4 quarters equals $659.46. So at the end of the year, the compound amount would be 8,000 plus 659.46, which is equal to 8,659.46. So what is the compound amount? Basically, for each quarter the accumulated principal plus interest is referred to as the compound amount. यानी हर एक क्वार्टर के लिए हमारे पास कंपाउंड अमाउंट चेंज हो रही है. यानी एट द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट थी वो थी $8,160, जिसमें 8,000 हमारी प्रिंसिपल प्लस 1,160 हमारा इंटरेस्ट था. सिमिलरली जो एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमारे पास जो अमाउंट आएगी
उसको हम कहेंगे कंपाउंड अमाउंट। तो हर एक इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के बाद, हर एक क्वार्टर के बाद जो अमाउंट आती है उसको हम कहते हैं कंपाउंड अमाउंट एट द एंड ऑफ सर्टन पीरियड। तो एक साल के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रही है उसको हम कहेंगे जस्ट कंपाउंड अमाउंट, एंड दिस इज in this case is 8659.46. So what would be the simple interest after 1 year? So if we just calculate the simple interest, it would be 8000 into 0.08 and into 1, because the time n is 1 year whole. So this is $640. So we can see that there is a difference between the simple and compound interest, and it is 659 minus 640, which is $19.46, 59.46. So this is the 19. So this means that compound interest exceeds simple interest by almost $20 per year. Continuous compounding. So after simple and compound interest, we will compute the continuous compounding. So if you recall that in the last lecture when we were studying the applications of exponential functions, we did discuss some things about the continuous compounding, और इसकी हमने एक एग्जांपल भी की थी कि continuous compounding का फार्मूला क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं. तो what we have also done there, that how to calculate the continuous compounding. So it can be computed by the following formula. So continuous compounding, which we denoted by S, is P times e to the power I times t, where I is rate of interest and t is the time period over which we are calculating the continuous compounding, and p is the principal. And we recall that E is the number 2.7183 approximately. So the example is that compute the growth in a $10,000 investment which earns interest at 10% per year over the period of 10 years. तो हमने $10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ग्रोथ फाइंड करनी है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की यही एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए, कि पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरह से कैलकुलेट करके पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट किया जाता है. तो सिमिलरली यहाँ पे हम उसको यूज़ करते हुए ये इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द कंटिन्यूस कंपाउंडिंग फार्मूला. सो हियर we have I, which is 10%, 10 by 100, which is 0.1, and the time t is given by 10, it is 10 years, and the principal is given by $10,000. So S is equal to continuously compounded amount. S will be P times e to the power IT. So this is equal to
So after 10 years the investment will grow to $27,183 at the rate of 10% per year, compounded continuously. So let's do the calculation of annual compounding for the same example. So if we do the annual calculation of annual compounding for the same example, here we can make some sort of table. Here we have principal, and here is the interest I, which as we remember is equal to P times I times N, and here we have compound amount, which is P plus I after each year. So what we will have after 1 year, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी $10,000 और उसके ऊपर जैसे कि 10% है तो 10,000 इंटू 0.1 इंटू 1, क्योंकि हमारा जो टाइम है 1 साल का है, तो ये होगा $1,000. So what will be the compound amount after 1 year? It will be 10,000 plus 1,000. This will be $11,000. So now in year 2 our principal would be this compound amount. हमारा principal जो होगा वो $11,000 होगा बजाय के 10,000 के, और इस केस में हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 1100, or which is the 10% of $11,000. So our compound amount will be 11,000 plus 1100, which would be 12,100. So after year 3 we will have the principal amount as 12,100, and the interest would be $1,210, which is a 10% of 12,100. तो 3 साल के बाद हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट होगी वो होगी 12,100 प्लस 1,210, जो कि होगी 13,310. तो इसी तरह हम कैलकुलेट करते हुए फाइंड कर सकते हैं कि 4 साल के बाद जो हमारे पास कंपाउंड अमाउंट आएगी वो होगी $14,641 अप्रॉक्सीमेटली. 5 साल के बाद जो हमारे पास आएगी वो होगी अमाउंट $16,289 अप्रॉक्स. 6 साल के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगी वो होगी $17,908 अप्रॉक्सीमेटली. 7 साल के बाद जो अमाउंट आएगी हमारे पास वो होगी 19,486 $19,486.5. After 8 years we will have the amount which is $21,589 approximately, and after 9 years we will have the amount $23,577 approximately, and after 10 years we will have the amount $25,937 approximately.
So if we do the same example for the quarterly compounding, we will take n is equal to 0.25, and for semi-annual से मुराद होती है कि एक साल में 2 दफ़ा, यानी हर एक 6 मंथ के बाद कंपाउंडिंग हो रही है. So for semi-annual compounding we will take n is equal to 0.5. So if we use quarterly compounding, then after 10 years, quarterly compounding after 10 years would be equal to 26,830, and semi-annual compounding after 10 years would be equal to $26,533 approximately. So what we conclude that the effect of compounding become compounding of interest becomes more significant as the period of investment becomes. तो इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग जो होता है वो सिग्निफिकेंट होता जाता है जैसे जैसे कि इन्वेस्टमेंट का पीरियड बढ़ता जाता है. हायर द इंटरेस्ट रेट, the greater the interest earned each compounding period, and greater the rate of growth in the investment, and greater the rate of growth in the investment. What I also want to add that what if we also want to compute the simple interest. The simple interest for the same example will give this after 10 years simple interest the earning of $20,000.
अगर $10,000 को सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 10% पर ईयर पे इन्वेस्ट किया जाए तो आफ्टर 10 years we will get $20,000. So compound interest is greater than simple interest. That's what we have seen in the last examples. The value of an investment increases with the increased frequency of compounding. अगर compounding frequently होगी तो investment की value भी उसी ratio से बढ़ती जाएगी. So by frequency we mean frequency refers to how often is compounded. For example, we have annual compounding, we have semi-annual, we have quarterly, यानी हर 3 महीने के बाद सेमी एनुअल, हर 6 महीने के बाद एनुअल, हर 12 महीने के बाद मंथली, हर महीने के बाद etc. So the following graph which we will draw now will illustrate this phenomena very well. Okay, the value of an investment increases with increased frequency of compounding. So this is our y-axis and this is our x-axis. On x-axis we denote the number of years, 1 2 3 4 6 7 10. x-axis को हम टाइम से डिनोट करते हैं और this is time in years and this is the compound amount after each year or the amount after each year. So here we have 10,000 which is our principal amount at time 0. Let's just denote the 12,500. So this is 15,000, this is 17,500, this is 20,000, this is 22,500, this is 25,000 and this is 27,500 and this is 30,000. So what we know that all our graphs will start from here, and what we also know that for the simple interest it will end up here, because after 10 years we get $20,000. So this is $20,000, and that's what we get if we invest the money on the simple interest. So if we use the annual compounding, that we get 25,937. So this will give us some point here. This is 25,937. Just to make graph a little bit more clearer, 26, 27 and 28. So this is 25,937. So roughly with the annual compounding we basically start here, and then with time we slowly goes up. So this is annual compounding. So if we have the semi-annual compounding, that will get 26,000
533. So here we will get something which is 26,523, 26,533, and just above it we will get something which is 26,850. This is quarterly compounding, and this is semi-annual compounding. And then we have 27,183, which is continuous compounding. Compounding. This will be the graph. So roughly this will be the graph for quarterly compounding, and this will be the graph of continuous compounding. In fact, the exact graph is very much given in the book, but this really just roughly shows that how you can compare the different kind of interest on the graph, and graph really also tells the story that the value of an investment increases with increased frequency of compounding. So single payment computations. Suppose we have invested a sum of money and we wish to know that what will be the value of money at some time in the future. यानी हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं और हम ये मालूम करना चाहते हैं कि फ्यूचर में उस जो पैसे की वैल्यू है आफ्टर सम टाइम वो क्या होगी. So in knowing this, we assume that any interest is computed on compounding basis. हम ये assume करते हैं कि जो भी interest है वो compounding basis पे calculate होगा. So we recall that the amount of money invested is called principal and the interest earned is called the compound amount. After some period of time, जो हमें interest मिलता है उसको हम कहते हैं compound amount. Given any principal invested at the beginning of a time period, the compound amount at the end of the period is calculated as P plus I times P. क्योंकि हमारे पास कोई भी अगर टाइम पीरियड हो वो हम उसको बेसिकली डिनोट करें यहाँ पे 1 से. तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड अमाउंट होगी वो होगी P plus I times P, where P is principal, I is the interest rate in percent, and S is compound amount. So now to get a general formula, we let P is the principal, I is the interest rate per compounding period, and N is the number of compounding periods, that is the number of compounding periods in which the principal has earned interest, or S is the compound amount. तो कंपाउंड अमाउंट फाइंड का जनरल फार्मूला फाइंड करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हम P प्रिंसिपल को डिनोट करेगा, I जो है इंटरेस्ट को डिनोट करेगा, N जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स को डिनोट करेगा. अ पीरियड में बी एनी यूनिट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल ईयर, मंथली, एटसेट्रा. So both I and N should be defined for the same period of time. यानी interest और number of compounding periods जो है वो same period of time के लिए defined होने चाहिए. So what we know that the compound amount after one period would be S is equal to P plus I times P. So this can be written as P times 1 plus I. So similarly the compound amount after two periods would be compound amount after the one period and interest earned during the second period. So in this case this S would be equal to P times 1 plus I. ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसको हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी इंटरेस्ट जो है. अब इस टाइम जो इंटरेस्ट होगा वो इस अमाउंट के ऊपर होगा, P times 1 plus I के ऊपर. So we can take the P times 1 plus I common. तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 और यहाँ पे आएगा हमारे पास I.
So this is equal to p times 1 plus I square. So similarly हमारे पास compound amount after 3 periods होगी. S is equal to p times 1 plus I square plus interest time p times 1 plus I whole square. So if we can take p times 1 plus I whole square common, you get 1 plus I here. So this gives us p times 1 plus I whole cube. So continuing in this way, after n periods the compound amount would be S is equal to 1 plus I to the power n. So where now we can redefine or respecify our variables is that P is principal, I is the interest, per percent per period, and n denotes the number of periods, and n is number of periods. So what this also means that the compound amount S is an exponential function of n. An exponential function of number of compounding periods n. So S is the exponential, S is the function of n. So if you recall, we have also seen this formula in the last lecture where we have done the applications of exponential functions. So now we have computed this compound amount formula. In the next lecture we will also be doing some more applications of this formula. So in summary, what we studied today is the interest, simple interest, compound interest, and continuous compound interest, which is part of compound interest, and then the graphical comparison of all type of those interests by an example, and at the end single payments and its computation, the topic we started, and we will finish this in the next lecture. So in the next lecture we will be doing some examples using compound amount formula, computing present value, further applications of compound amount formula. उसके बाद हम effective interest rate discuss करेंगे, and then we will briefly start the topics of annuities and their future values. उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा. Interest, different type of interest, and how to find different type of values. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.